sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. The Bible talks about the joy of God's people and compares it to the joy of the harvest time. देखिए बाइबल जो है परमेश्वर के लोगों के आनंद और कटनी के समय में जो आनंद होता है उसकी तुलना कर कर बताता है। So harvest time, as it approaches, people get very happy. कटनी का समय जो है बहुत ही आनंद में होता है जब वो करीब That's in the आता है। natural world. वह तो प्राकृतिक दुनिया में In है। the spiritual also, it is very true. आत्मिक दुनिया में भी ये बात बहुत सच है। Just like you can tell that harvest is coming, जैसे आप कहते हो कि कटनी आ पहुंची है, in the same way you can tell your harvest spiritually is going to come. उसी रीति से तुम भी कह सकते हो कि तुम्हारी आत्मिक कटनी भी बहुत करीब And है। just like people get everywhere, people get happy during harvest time. जैसे हर जगह में लोग आनंद होते हैं, खुशियां In मनाते the हैं, same way, spiritually, there's a joy that is sparked in your heart because you know in your heart the harvest is उसी near. तरह तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जो है आनंद और खुशी उबलने लगेगा क्योंकि कटनी आ पहुंची So है। we talked
about how to discern when the harvest तो is. हमने बात किया था कि ये बात कैसे समझा जाए कि कब कटनी है। Just like they say 4 months, you can say when it will be. जैसे वो कहा गया है कि 4 महीने बाकी हैं, तो तुम भी कह सकते हो कि कब कटनी It's है। very important to discern the harvest time in your life. तुम्हारे जिंदगी में कटनी का समय को समझना बहुत ही जरूरी है। When you have sown, you need to be a good discerner of when the harvest comes. जब आपने बो दिया है तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि कब कटनी But I है। need to cover 2 more things और here. 2 बातें और मुझे देखना जरूरी है यहाँ We पर। have covered when the harvest must come and you must discern when. हमने देखा था कि कब कटनी आने वाली है और कब कटनी काटी You जाए। need to discern हमें when. समझना कब, But we need to discern where and how much also. और हमें यह भी समझना जरूरी है कि कितना और कहां पर काटे। Let's talk about it. उसके बारे में बात करते हैं। You know, where will your harvest come from? कहां से तुम्हारी कटनी आएगी। You need to discern where your harvest will come from. तुम्हें जानना जरूरी है कि कहां से तुम्हारी कटनी आने वाली है। You got to know where it's going to come from. तुम्हें जानना जरूरी है कि कहां से कटनी आने वाली है। See, sometimes people don't discern that. That is why they fail to reap the harvest. कभी-कभी लोग इसे नहीं समझते, इसीलिए वह कटनी को नहीं काट पाते In हैं। Luke chapter 5, there is a very interesting story that we have talked about in other contexts. लूका का 5वें अध्याय में एक अद्भुत सी कहानी है जो पिछले विभिन्न पृष्ठभूमियों में हमने देखा था। We have seen it much. बहुत बार इसे देखा है। But let's talk about it. इसके बारे में जरा अब यहाँ पर बात Well, you करते can हैं। keep it open there if we need it. We'll read some portions of it, but it's very familiar. आप जो है उस पंक्ति को खोल कर रख सकते हो, अगर चाहिए तो हम उसे खोल कर पढ़ सकते हैं। You know, Jesus comes to a seashore where Peter and his friends have gone gone fishing all night and caught nothing, and they're folding up and are getting ready to go home. यीशु समुद्र तट के पास आता है जहां पर पतरस और उसके सभी मित्र जो हैं मछली पकड़ने का काम करते थे। वहां पर रात भर मछली पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिला, जालों को समेट रहे थे। Jesus asks for Peter to lend his boat for him to preach. और यीशु जो पतरस से कहता है कि वह अपना नाव दे ताकि वह खड़े होकर प्रचार Now करे। Peter has a wonderful opportunity to sow. पतरस के पास जो है अद्भुत सा एक मौका मिल गया बोने का। Now that is the day particularly he could have said to Jesus, look, I'm tired, preacher, you know, I'm ready to go home. All night I've been out in the ocean. You don't know how tired I am. Leave me alone for today. Any other day fine. देखिए पतरस तभी बोल सकता था, देखो प्रचारक, मैं जो है रात भर कड़ी मेहनत करके कुछ बिना पाए आया हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, कोई और नाव देख लो। You preachers don't have anything else to do. You're coming and wanting to preach, but I've been working all night. I got to go home. देखिए तुम प्रचारकों के लिए कोई और काम नहीं है, पर मैं मछुआरा हूँ, रात भर मैंने मेहनत करके थका हुआ हूँ, घर जाना है। I'm tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ। I'm frustrated. मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। I didn't earn one penny tonight. आज रात मैंने एक फूटी कौड़ी तक नहीं Don't कमाई है। bother me tonight. मुझे मत छेड़ो आज। I would like to go home tonight. मैं आज घर जाना चाहता हूँ। If he said that, you will call it a very natural response. अगर ऐसा कहे तो हम प्राकृतिक रूप से उसको उत्तर कह सकते But हैं। Peter was given an opportunity to sow, and he takes it up. He says, all right, you take पर my boat. पतरस को जो है बोने का एक मौका दिया जा रहा है और वो उसे ले लेता, कहता ठीक है चलो। He sows his boat. वह अपने नाव को वहां बोता है। No fish in the boat. नाव में कोई मछली नहीं No है। fish in the boat. मछली है ही नहीं नाव में। And Jesus is not a fisherman who's going to go out and fish. और यीशु को मछुआरा नहीं है जो बाहर जाकर मछली पकड़े। And Peter the fisherman never thought a boat can be used as a stage और for पतरस preaching. मछुआरा कभी नहीं जानता था कि उसका नाव जो है प्रचार करने वाला स्टेज बन सकता है। He didn't know that he had something that Jesus needed. वह नहीं जानता था कि उसके पास कुछ है जो यीशु को जरूरत है। He didn't know that he can use the empty something that he has as a seed for something greater. वह नहीं जानता था कि उसके पास जो है वो जो खाली नाव है वह एक बहुत बड़े बीज के रूप में उपयोग किया जा सकता Some है। people think always like this. They say, well, brother, I don't have much. कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है ब्रदर, Well, what can I give? मैं क्या दे सकता हूँ। But Peter would have, could have easily decided that like that. पर पतरस जो है आसानी से उसे निर्णय But कर he सकता gives था, his boat. पर वह अपना नाव देता है। And here Jesus preaches from the boat to the crowd that stands at the seashore. और यीशु यहाँ खड़े होकर जो है नाव पर खड़े होकर समुद्र तट के लोगों से बात After करता he है। preached, और उसके प्रचार करने के बाद the Bible says in 4th verse in chapter 5, Luke verse 4 says, after he had left speaking, लूका 5वां अध्याय 4th वचन में कहा गया है कि उसके प्रचार करने के बाद he said, Simon, launch out into the deep and let your nets down for a drought. शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Now the one who challenged him to give his boat अब जिसने चुनौती
दिया था उसके नाव को देने के लिए। Now he's challenging him to do something that he would not like to do right अब now. उसे चुनौती की बात वापस कर रहा है जो पूरी रात उसके करने के बाद कुछ नहीं मिला। A fisherman does not fish during the day because the fish can see what's देखिए happening. दिन में जो है मछुआरे मछली नहीं पकड़ते क्योंकि मछली देख सकता है क्या He क्या has tried all night उसने पूरी रात कोशिश की है and didn't catch one fish, and now Jesus is saying in broad daylight, you cast the net and you in for a और प्रचार करने के बाद वो कहता है कि दिन दहाड़े में जाकर जालों को डालो। And he could have easily said to Jesus, look, you don't know nothing about fishing, you mind your business, you preach your sermon, you go home and I'm going to go और home. वह यीशु से सीधा कह सकता था कि देखो तुम्हें कुछ नहीं मालूम है मछली पकड़ने के बारे में, तुम प्रचार करो अपना काम खत्म करके घर चलो। But Jesus has got payback in his mind. पर यीशु के पास जो है उसे वापस कुछ देने के लिए सोचता Because Jesus is not one to bum off of you. क्योंकि यीशु anything. जो है जो कुछ भी तुमसे लेना लेकर तुम्हें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a bum. वह कोई He is not a guy who just swipes things off of you and just takes it and say thank you and never does anything वह for कोई you. ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तुमसे जो कुछ भी ले सकते हैं लेकर तुम्हें सिर्फ धन्यवाद देकर चले I जाए। say that because sometimes I think we preachers have made the mistake. We've always said, what have you given for God? What have you given for God? And we never told people about what God gave देखिए us. हम प्रचारकों ने जो बहुत बड़ी गलती की है, हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि तुमने परमेश्वर ने क्या दिया है, परमेश्वर ने क्या दिया है, और कुछ परमेश्वर से लेने के बारे में नहीं I'll कहते हैं। tell you, God will do more for you than you could ever do for मैं him. तुमसे कहता हूँ परमेश्वर तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, तुम्हारे करने से भी ज्यादा वो तुम्हारे लिए कर सकता Peter है। did not realize, I think, that he gave an empty boat. He's not now going to get a boat that is filled up, overflowing and breaking पतरस ने literally. यह महसूस नहीं किया कि उसने जो है यीशु मसीह को खाली बोट दिया है, नाम दिया है, पर वापिस जब मिलेगा तो भरा हुआ उभरता हुआ उसे मिलने वाला है। Jesus says, cast your net. यीशु कहता है कि अपने जाल को फेंको। Simon told Jesus, look, we've toiled all night and we've caught nothing. शिमोन ने यीशु से कहा, देखो रात भर हमने मेहनत की, कुछ नहीं पाया है। Nevertheless, at your word, I'll do it. फिर भी तेरे वचन को लेकर मैं डालता हूँ। Now, I think Jesus was preaching and Peter was one of the hearers. मुझे लगता है कि यीशु वहाँ प्रचार कर रहा था और पतरस उसे सुन रहा I था। think Jesus must have preached pretty much like me. यीशु शायद जो है मेरी तरह उसने प्रचार किया होगा। After hearing that preaching, he is now ready to do anything. उस प्रचार को सुनने के बाद जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। He says, all right, I'll do it. उसने कहा ठीक है मैं उसे करता हूँ। Normally I won't do it, but at your word, I will do साधारण it. रूप से मैं नहीं करूंगा, पर तेरे बात को लेकर मैं Jesus डाल must डालता have हूँ। preached something wonderful. यीशु ने कुछ अद्भुत सा वहाँ प्रचार किया होगा। That a man at the lowest point of his life dares to act in faith. एक मनुष्य जो है अपने जीवन के बिल्कुल निचले भाग से हिम्मत से उसके वचन को सुनकर विश्वास करके And करता he है। cast his net in, and you know the story of how the boat was filled and the net was breaking. They had to call their friends. Another boat was called in. That was also full. And they had caught fish like they had never caught ever जब before. यीशु की बात को सुनकर उसने जाल डाला तो मैं कहता हूँ कि जाल में इतने मछली आके गिरे कि अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा, दूसरे नाव को बुलाना पड़ा, सभी नाव भरकर उभरने लगे। What happened that brought such big results for Peter? क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा नतीजा पतरस ने पाया? What brought this kind of a harvest for इस him? तरह की बहुत बड़ी कटनी को उठे कैसे पाया? I'll tell you what. मैं कहता हूँ वह कैसे? He was able to discern where the harvest is. वह समझने लगा था कि कहां से कटनी आने वाला है। When God showed him and said, put it in the deep, all his mind said no, and his reasoning said no, everything said no, his friends must have said no, but he said, I'm going to do it. जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जाल फेंको तो शायद उसके ज्ञान ने, उसकी बुद्धि ने, उसके दोस्तों ने, उसके करीबी लोगों ने कहा होगा कि नहीं डालना है, पर उसके हृदय की विश्वास ने कहा कि But डालो। he decided to do it. पर उसने निश्चय किया कि वो डाले। He discerned the harvest, that it is there, where it is there. वह समझने लगा कि कटनी कहां पर है, वहीं पर You उसने शुरू see, किया। it's not easy to do it because it involves more work, more commitment, and so on. देखिए ऐसा करना बहुत आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ही समर्पित रहना The पड़ता man है। has worked all night. इस आदमी ने पूरा रात काम He's किया ready है। to go home. वह घर जाने के लिए तैयार You हो want to रहा work है। all over again? वो क्या वापिस काम करेगा? But when you discern the harvest, when you understand it, you began to put in the पर sickle. तुम कटनी को अच्छी तरह समझते हो तो जो उसने कहा है उसे करने के लिए तैयार And हो जाते prosperity comes. हो और समृद्धि आने लगती है। You see, that is how, businesses and success come. देखिए ऐसे ही जो सभी प्रकार के व्यापार और सफलताएं आती हैं।
Why? क्यों? Because you begin to discern. क्योंकि वह समझने लगते हैं। God begins to show. परमेश्वर सब कुछ दिखाने लगता God है। begins to lead. परमेश्वर आगे चलने लगता है। God begins to show his finger and say, do this. परमेश्वर अपनी उंगली दिखाकर कहता है कि इसे करो। Everybody thinks it's useless. Don't do सब it. समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है, इसे मत करो। I remember when I came and started ministry here in this nation, some of the closest people said, you're a fool for doing मुझे अच्छी it. तरह याद है जब इस देश में आकर मैंने सेवकाई को शुरू किया था तो बहुत सारे करीबी लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख है कि यहाँ पर आके सेवकाई शुरू कर And रहा why है। you want to do this? क्यों ये करना चाहता है? Just, here, there's nothing. यहाँ तो कुछ भी नहीं है। But look what we've got पर today. देखिए आज हमने क्या They पाया है। said there's nothing. उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है यहाँ। No catch. कोई पकड़ नहीं No पाएगा। fish. कोई मछली नहीं है। Nothing can happen here. कुछ भी यहाँ नहीं हो सकता है। But Jesus pointed his finger and said, put your net here. पर यीशु ने अपनी उंगली दिखाकर कहा कि यहाँ मछली के लिए जाल फेंको। Put it down here. यहाँ पर फेंको अपनी जाल। Put it down here. यहाँ पर अपने जाल फेंको। See, before that, I was sowing much. उससे पहले मैं बहुत कुछ बो रहा था। I was studying and I was preparing and I was preaching and I was practicing and I was doing my best over there. मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जो मुझसे हो सकता था सब कुछ बेहतर रूप से I कर was रहा था। learning the ministry. मैं सेवकाई सीख रहा था। I thought I have already arrived. I'm fine. मैंने सोचा कि मैं पहले से ही पहुंच गया हूं, मैं बिल्कुल I'm श्रेष्ठ doing से fine. कर I'm रहा just हूं। have to just improve on it. मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे और थोड़ा इम्प्रूव करना One है। day God told me this is only training for what you're going to do over एक दिन there. परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम करने वाला है उसका प्रशिक्षण यहाँ दे रहा This हूँ। success that I've given you here is not so you can stay here and have the success here. I showed you that you can succeed. So you'll go there and start brand new and succeed जो there. सफलता मैं तुझे यहाँ दे रहा हूँ वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि ये प्रशिक्षण है। यहाँ से ये बातें ले जाकर जहाँ मैं बताऊँ वहां करेगा तो बहुत बड़ी सफलता को You पाएगा। can do it. तुम उसे कर सकते हो। So I did it, and I tell you, I thank God 1,000 times, sometimes for helping me to discern where to go and where to cast the net. तो मैं उसे समझ गया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर आभारी हूँ कि जहां उसने कहा वहां जाकर मैंने जब किया तो मैं कहता हूँ 100% कटनी को मैंने पाया। Jesus pointed his finger and said, put your net here. पर यीशु ने अपनी उंगली दिखाकर कहा कि यहाँ मछली के लिए जाल फेंको। Put it down here. यहाँ पर फेंको अपनी जाल। Put it down here. यहाँ पर अपने जाल फेंको। See, before that, I was sowing much. उससे पहले मैं बहुत कुछ बो रहा था। I was studying and I was preparing and I was preaching and I was practicing and I was doing my best over there. मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जो मुझसे हो सकता था सब कुछ बेहतर रूप से I कर was रहा था। learning the ministry. मैं सेवकाई सीख रहा था। I thought I have already arrived. I'm fine. मैंने सोचा कि मैं पहले से ही पहुंच गया हूं, मैं बिल्कुल I'm श्रेष्ठ doing से fine. कर I'm रहा just हूं। have to just improve on it. मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे और थोड़ा इम्प्रूव करना One day है। God told me this is only training for what you're going to do over एक दिन there. परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम करने वाला है उसका प्रशिक्षण यहाँ दे रहा This हूँ। success that I've given you here is not so you can stay here and have the success here. I showed you that you can succeed. So you'll go there and start brand new and succeed जो there. सफलता मैं तुझे यहाँ दे रहा हूँ वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि ये प्रशिक्षण है। यहाँ से ये बातें ले जाकर जहाँ मैं बताऊँ वहां करेगा तो बहुत बड़ी सफलता को You पाएगा। can do it. तुम उसे कर सकते हो। So I did it, and I tell you, I thank God 1,000 times, sometimes for helping me to discern where to go and where to cast the net. तो मैं उसे समझ गया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर आभारी हूँ कि जहां उसने कहा वहां जाकर मैंने जब किया तो मैं कहता हूँ 100% कटनी को मैंने पाया। Many times you just have to discern where the harvest बहुत is. समय हमें समझना पड़ता है कि कहां पर कटनी है। Another example I'll give you. एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। Isaac, you remember Isaac? इसहाक याद है? During the times of Isaac, there was a famine. इसहाक के दिनों में जो है अकाल पड़ा हुआ Those था। days famines were उन common. दिनों में अकाल बहुत साधारण सी In बात थी। Abraham's day, there was a famine. अब्राहम के दिन में अकाल पड़ा। Recession, worse than a recession. यह जो है आर्थिक गिरावट से भी बड़ी है। This is next step after recession. यह जो है आर्थिक गिरावट के बाद का स्टेप है। Abraham's time there was a famine, but that famine did not kill Abraham. Abraham became richer than ever during the famine. अब्राहम के समय जो अकाल पड़ा था पर अब्राहम बहुत धनी बनता गया। That's the story you read the 13th chapter of the book of Genesis. वही कहानी है। उत्पत्ति के 13वें अध्याय को पढ़ो तो यही कहानी मिलती है। 12 and 13. 12 और 13वां अध्याय That is the story. वही कहानी है। And if you go on to 26th chapter, you read about the fact that there was a famine in the days of Isaac फिर उसके also. बाद जो 26वें अध्याय में तुम जाते हो तो इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा था, उसे पढ़ And पाते it हैं। says it like this, just like in the days of Abraham, in the days of Isaac there was a यहाँ famine. बताया गया कि जैसे अब्राहम के दिन में अकाल पड़ा वैसे ही इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा है।
Again, a challenge comes. वापस चुनौती आती है And everybody was fleeing to Egypt. और सभी लोग मिस्र देश में भाग रहे Egypt थे। was the most prosperous country. There was grain there. मिस्र देश बहुत से समृद्धि पाया हुआ देश था, वहां पर दाना मिलता था, They were well organized. बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज You था। could go get food there and वहां survive. जाकर जो है भोजन तो So पा they're सकते हो। all towns and villages just fleeing en masse to Egypt. सभी प्रकार के नगर गांव सब लोग जो है मिस्र देश की ओर भाग रहे And थे। God, right in the middle of it, speaks to Isaac. और परमेश्वर इस बीच में इसहाक से बात And करता है strange, he says to him, you don't run. और अजीब सी बात है कि वह कहता है कि तू मत भाग, You don't go to Egypt. You stay in the place where I will show you. तुम्हें मिस्र देश में जाने की जरूरत नहीं है, जहां मैं जाने के लिए कहूं वहां जाओ। Everybody was running, but he says, no, you stay here. सब लोग भाग रहे थे पर परमेश्वर कहा नहीं तू मत भाग। And if you तू read यहीं the रह। first few verses of chapter 26, you see that here. 26वें अध्याय के पहले कुछ वचनों को पढ़ोगे तो आप उसे पा सकते हो। It says, verse 2 says, the Lord appeared to him and said, go not down into Egypt. Dwell in the land which I shall tell thee दूसरा of. वचन बताता है वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र देश में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं इसी में Sojourn रह। in this land, and I will be with thee, and I'll bless thee, for unto thee and to thy seed. And I'll give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto तू इसी Abraham thy देश में father. रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं And पूरा I will करूंगा। make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य Because that मानेंगी। Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws, and Isaac dwelt in Gerar. क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको मेरी और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। In other words, everybody was going to Egypt. The trend was to go to Egypt, but God told this man, don't follow the trend, follow my दूसरे शब्दों में कहा जाए guidance. तो सब लोग जो है मिस्र देश में भागे जा रहे थे। मिस्र जाना भी बहुत बड़ा ट्रेंड था, पर परमेश्वर ने कहा है कि उस ट्रेंड को छोड़ दो, मेरे पथों पर चलो। Christian people are sometimes very much more interested in the trend than in God's ईसाई will. लोग देखिए हर वक्त जो है ट्रेंड पे ज्यादा भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पथों पर नहीं। Everybody's doing it, so I'll do it. सभी कर रहे हैं तो मैं भी उसे करता हूँ। No, do what God tells you to do. नहीं, परमेश्वर जो कहता है उसे करिए। God says, stay in this land. परमेश्वर का इसी देश में रहो। What happened? क्या हुआ? Look at verse 12. 12वें वचन को जरा देखिए। Then Isaac sowed in that land. फिर इसहाक ने उस देश में बोया। If you read the entire chapter, you will realize that there was no water in that land. Everywhere where you dig for well, no water पूरे there. अध्याय को जब हम पढ़कर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जो है पूरे देश में पानी नहीं था, अकाल पड़ा There's हुआ a था। drought. पूरा अकाल पड़ा हुआ था। That's why people are leaving, because you can't raise any crops इसीलिए there. लोग जो उस देश को छोड़कर जा रहे थे, कोई फसल What उग नहीं will रही you do थी। without water? पानी के बिना क्या किया जा सकता है? So everybody is fleeing. तो सब लोग भागे जा रहे थे। But Isaac, when he digs a well, there's water. पर ईसाक जब कुआं खोदता है तो वहाँ पानी आता है, Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। That's the story. वही कहानी है। And it says, verse 12, Isaac sowed in that land which everybody was fleeing, and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. फिर इसहाक ने 12वें वचन में कहा गया, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। You see, God will prosper you in the place where He shows you. देखिए जहां वह देश दिखाता है उस देश में परमेश्वर तुम्हें समृद्धि You बनाएगा। got to discern where the harvest is. तुम्हें समझना होगा कि कटनी कहां पर है। Everybody was running, but this man was reaping सभी लोग 100-fold. भाग रहे थे पर यह व्यक्ति उसी देश में 100% I कटनी think काट रहा in था। Gerar economic times, that must have been a headline. Man reaps 100 times, 100-fold during famine. मुझे लगता है कि गेरार इकोनॉमिक्स टाइम्स के उस दिन के समाचार पत्र में जो है इसहाक के बारे में बताया कि 100% Everybody is surprised. सभी लोग आश्चर्यचकित थे। 100-fold 100% during the famine. अकाल के समय में Everybody is suffering and you're getting richer than ever. सब पीड़ा झेल रहे हो और तुम धनी पे धनी बने जा रहे हो।
Hello. हेलो, What is the secret? रहस्य क्या है? Discerning where the harvest is. कटनी कहाँ पर है उसे समझना। Where is my blessing going to come from? कहाँ से मेरी आशीष आने वाली है? Which field? कौन से देश से? Which area? कौन से एरिया से? In what way? किस रीति से? How am I going to get it? कैसे मैं उसे पाने वाला And हूँ? I tell you, you will find in your life that God will show you many times where it will come मैं from. तुमसे कहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा कि कहाँ से आशीष आने वाली है। He will show you exactly where to cast your बिल्कुल net. तुल्य रूप से बताएगा कि कहाँ तुम्हें अपने जालों को He will फेंकना show है। you exactly where to sow. वह दिखाएगा कि कहाँ तुम सही रूप से बो। He will show you where your blessings, your miracles will come from. वह दिखाएगा कि कहाँ से तुम्हारी आशीषें और तुम्हारे अद्भुत आने So वाले he हैं। received, he reaped 100-fold. तो उसने 100% कटनी पाया In the same year. उसी साल में। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy.